Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam. There are few devotees says that we have fallen from spiritual world, and some devotees say that we never went to spiritual world. Can you please clarify what is right? What question? This question is asked by Ruchika Mataji. Ruchika. Prabhupada said both things. Prabhupada said both things. But more often he said we fell in the spiritual world. But more often he said that we fell from the spiritual world. And that's why the magazine is Back to Godhead. That's why our magazine is Back to Godhead. So there's a whole book on this. There is a whole book on this. That at different times, different things were said. That at different times, different things were said. Then the question was given to Bhakti Vinod Thakur. Then the question was given to Bhakti Vinod Thakur. If he came from the spiritual world, If we came from the spiritual world, then why did we decide to come here? Why did we deciding to come here? He said, a person falls on a ship. A person falls from the ship. And a lifeboat comes to save you. A lifeboat comes to save you. You don't ask first, before I get on the boat, tell me how I fell in. You will not ask, before I get into the boat, tell me how did I came here. The sharks telling all around. Sharks swimming all around. First on the lifeboat, once you get back, you understand how you fell. First you get on the lifeboat, then once you get there, you'll understand how you came here. You don't understand anyway. We don't understand anyway. Krishna Guru Maharaj, thank you so much for the wonderful class. A lot of times we feel very insignificant of our capabilities to use them in the service of Krishna. So what is the first step we should take to spread the teaching Krishna to the world? Here and person here. तो माता जी का प्रश्न था कि कैसे मैं कृष्ण भक्ति करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत में मुझे लगता है कि मैं बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नगण्य हूँ, तो मैं कैसे शुरुआत करूँ, सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि पहले आपको श्रवण करना चाहिए और फिर कीर्तन करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और बहुत सारी अपनी लिस्ट भगवान को देते हैं, मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए। लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं भगवान के पास कि मैं बहुत नगण्य हूँ, लेकिन मैं आपके प्रति समर्पण करना चाहती हूँ, कृपया करके मुझे आप अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सब समय भगवान कृष्ण आपकी सेवा में नियुक्त रहूं। तो जो पुरुष हैं वो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कृष्ण से कि कृपया करके अगर वो विवाह करना चाहते हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे कृष्ण भावना भावित एक पत्नी दीजिए। और माताएं प्रार्थना कर सकती हैं जो विवाह करना चाहती हैं कि मुझे कृष्ण भक्त एक पति के रूप में कृष्ण भक्त दीजिए। तो अगर आप कुछ भी चाहते हैं भौतिक, भगवान कृष्ण से संबंधित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Hare